People often says you don't need to know any math to programming computer. That is truthy. However, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. But magic isn't real. Maths explain it all. Developers अक्सर मैथ्स को अवॉइड करते हैं because it looks scary, but it actually makes complicated tasks like computer graphics and neural networks easier to understand. And not just this, ये physical universe के सारे secrets को भी reveal करता है. There are a few abstract maths concepts जो आप ignore नहीं कर सकते हो, and understanding them will make you feel like a true engineer. So इस वीडियो में let us talk about 10 basic math concepts which every engineer should understand. We will understand them using memes and visual aids. So let us start after this short channel intro. टॉपिक नंबर 1 है बुलियन अलजेब्रा, जिसका लगभग हर बार यूज होता है जब भी हम कोई कोड लिखते हैं। बुलियन एक बाइनरी वेरिएबल होता है जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू और फॉल्स को। नाउ यहाँ पर वी हैव 3 ऑपरेटर्स जिनका हम यूज कर सकते हैं टू वर्क विद देम, एंड ये ऑपरेटर्स हैं एंड, और एंड नॉट, और यू कैन इवन से कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। इमेजिन यू वांट अ गर्लफ्रेंड, एंड खुद को डिस्क्राइब करने के लिए यू कैन यूज बोथ रिच एंड हैंडसम बुलियन। So if you are rich and handsome, you will definitely get a girlfriend. But if you are not rich and handsome, you will have to pay for OnlyFans girlfriend. If you are rich or handsome, you can get a girlfriend, but your selection is more limited. हम इसे कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं using logics like if statement. और we can even use Venn diagrams इसको visually देखने के लिए. और हम लोग truth table भी बना सकते हैं, something that is shown here. कॉन्सेप्ट नंबर 2 है न्यूमरल सिस्टम्स का। न्यूमरल सिस्टम विद बेस 2। थ्रू आउट आवर हिस्ट्री ह्यूमंस ने बहुत सारे डिफरेंट क्लेवर वेज ढूंढे हैं टू काउंट नंबर्स, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी बेस 10 को यूज करते हैं, लाइक 10 फिंगर ऑफ योर हैंड्स। फॉर एग्जांपल इन नंबर 4 to 3, 4 100 प्लेस पर है, विच मीन्स 4 times 100। 2 10s प्लेस पर है, विच मीन्स 2 times 10s, एंड फाइनल नंबर इज 1 times 3। बट कंप्यूटर वर्क्स विद बेस 2 न्यूमरल सिस्टम विच वर्क्स द एग्जैक्ट सेम वे। बट बिकॉज हमारे पास बस 2 सिंबल्स होते हैं, सो ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, लाइक 2 4 6 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड हाउ अदर सिस्टम वर्क्स लाइक बेस 16 और हेक्साडेसिमल, जो डिजिट 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स A to F यूज करता है। इस commonly used binary values में you can see that everything is in a more concise way because each hexadecimal digit is translated to 4 bits. We also have base 64 जो और ज़्यादा alphabets और digits का use करता है to encode binary values which helps developers to represent binary data. For example, image as a string of text. And जैसा कि मैंने पहले बताया कंप्यूटर base 2 को use करता है, so at the time of output ये again base 2 values को base 10 में convert करता है for our understanding. और इसे करने का सबसे अच्छा वे है यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0.1 प्लस 0.2 को एग्जीक्यूट करो एंड द रिजल्ट विल बी 0.3 000 000 000 000 एक कंप्यूटर इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकता है? वेल, साइंस में नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेस, और नंबर बहुत छोटे हो सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एटम्स। एंड हम इन नंबर्स को कंप्लीटली नहीं लिखते हैं, इंस्टेड वी यूज साइंटिफिक नोटेशंस, जहां पर एन एक्सपोनेंट इज रेज्ड टू एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू व्हिच मेक्स द नंबर अपीयर मोर कंसाइज। कंप्यूटर्स भी सिमिलर अप्रोचेस का यूज करते हैं फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एंड दिस इज बिकॉज उनके पास लिमिटेड स्पेस होता है, which is 32 bit for single precision और 64 bit for double precision, जो कि डिफॉल्ट है इन लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है बिकॉज देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो डेवलपर्स को अलाउ करती है टू मेक अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रेंज एंड प्रिसीजन। एंड कुछ नंबर्स लाइक 0.1 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड परफेक्टली एज अ बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट, which is the only reason we get these tiny errors. Now आपको पता चल गया है how number works, so let us talk about logarithmics. और इसको समझने के लिए एक एक्चुअल लो को इमेजिन करो which is of 16 feet, जिसको हम बार बार हाफ में डिवाइड कर रहे हैं until we reach the height of 2 feet. Now अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, but it curves gradually. कंप्यूटर साइंस में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो इसी अप्रोच पर बेस्ड हैं, लाइक बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बट समथिंग जो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है इज
If we know how many times log is cut, we can get the original value by raising 2 to the power of that value, जो इस केस में 4 है. This is called exponential and logarithmic बिल्कुल इसके opposite है. Imagine हमें पावर नहीं पता है and we only know the original length. And हमें पता करना है कि log को कितनी बार कट करना होगा to get 2. और हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं with base 2 log on original length returning a value of 4. Base 2 is called binary logarithmic. However, मैथ्स में हम कॉमनली बेस 10 यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक. ये बहुत ही यूजफुल है. बट अब बात कर लेते हैं सेट्स की. सेट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक वैल्यूज की और इसकी बेस्ट एग्जांपल कैन बी अ रिलेशनल डेटाबेस जिसमें हर टेबल इज अ सेट ऑफ यूनिक रोज एंड इन टेबल्स को हम लोग एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. लाइक टू सेलेक्ट एंटिटीज जो दोनों टेबल में कॉमन है, वी कैन यूज इनर जॉइन which is called intersection in set theory. And to get all entities for once in both table, we can use outer join, which is union in set theory. By doing left and right joins, in concepts को combine किया जाता है, like by combining an intersection with a difference between two sets. कि हम अब तक ऐसे elements की बात कर रहे हैं जो countable हैं, which falls under discrete maths. And in oppose, we can talk about maths like geometry and calculus that deals with real number and approximation and falls under continuous. And it brings us to a new topic called combinatorics. Now what is this? It is a simple logic of counting numbers. By combining such combination of permutations, like if you have an app like Tinder and you need to count possible combinations of matches as a part of more complex algorithm that figures out what to show to end user, or maybe building a global distributed database and you need to figure out how many database partition you will need around the world. It is all about understanding how a pattern can emerge. आप यहाँ पर Fibonacci series के फॉर्मूले को देख सकते हो. And if you have ever built a function to generate it, congratulations! You did combinatorics and unlocked the secret of the universe. Google के engineers भी same kind of logic का use करते हैं to render tiles on tools like Google Maps. And the God used this type of pattern all over the nature. Combinatorics is totally related to graph theory. ग्राफ में दो पार्ट्स होते हैं, नोड्स और वर्टिसेस एंड एजेस, जो इनको कनेक्ट करता है. Like a person can be a node and edge can be a relationship between them. Like you love your mother and your mother loves you back. ये एक undirected graph है because relationship goes both ways. However, you might also love your OnlyFans girlfriend, but this will be a directed graph because the relationship only goes one way. अब इसमें edges weighted भी हो सकते हैं, which means one relationship is of more priority than the other one. If a node converts back to itself, it is called cyclic, otherwise it is called acyclic. Like when using Dijkstra's algorithm to find most efficient way while navigating through traffic. But graph traverse algorithm लिखने से पहले you should understand complexity theory, जो हमें बताती है how much time and space an algorithm will take. Input represents number of steps to complete a task. Like reading a single element from an array would take order of 1 or constant time, which is extremely fast. But अगर हमें array पर loop over करना है तो we will take order of n, where n is length of array. But for every iteration, we loop over the same array again. That gives us order of n square. However, more sophisticated algorithms like binary search cuts the search area in half after each iteration, providing us with the logarithmic time. Understanding की complexity को कैसे calculate करते हैं बहुत essential है for technical interviews. But now let's move on to statistics. ये बहुत ही crucial है, especially when you want to do something like artificial intelligence, because machine learning एक fancy way है of doing statistics. Like जब भी आप ChatGPT पर कुछ सर्च करते हो तो it provides a response based on best fit as provided in the prompt. Starting में you should understand mean, mode and median and how standard deviation indicates how close values intersect or correlate to the mean. There is a ton to learn beyond, but something that I found useful is a difference between linear regression and logistic regression. Linear regression में our goal is to predict a continuous value, like amount of money we will lose after buying a stock. The relation between input and output value is linear and the idea is to find the line that best fit the dataset. However, logistic regression different set of problems के लिए use होता है, like classification. We can say maybe an app that predicts if the image is hot dog or not a hot dog. In this case, relationship is not linear but a sigmoid function, which might predict the probability that a Boolean variable is true or false.
And that brings us to the final but the most difficult topic, linear algebra. Linear algebra का कंप्यूटर में यूज होता है when we talk about computer graphics and deep neural networks. Linear algebra में we need to understand three words, where first one is scalar, which means single numeric value. Second is vector, which is a list of numbers like a one-dimensional array. And third is a matrix, which is like a grid or a two-dimensional array that contains rows and columns of numeric values. Now what's cool is a vector can represent points and directions in a 3D space, while matrix can represent transformation that happens to these vectors. अक्सर गेमिंग में आपने देखा होगा when you move a player around तो light and shadow भी magically change हो जाती है. But it's not magic, rather a linear algebra that is being distributed on your GPU. Imagine आपके पास 2D vector है which have set points 2, x and 3, y जो represent करता है single point in an image. Now इस पर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, शेयर एंड सो ऑन. लेट अस इमेजिन हम लोग स्केलिंग परफॉर्म कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ 4, x to 6, y और स्केलिंग को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स पॉइंट एज अ कॉलम वेक्टर. एंड अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं टू स्केल द पॉइंट्स टू इट्स टारगेट लोकेशन. इस तरह के ऑपरेशंस क्रिप्टोग्राफी में भी बहुत क्रूशियल हैं, सच एज इन RSA एल्गोरिथम. It is also essential in deep neural network which use vectors to represent features and then uses metric multiplication to propagate values between nodes and the network. The underlying math is quite simple but requires a massive amount of computational power to handle that much of data. And अब हम लोग देख सकते हैं that the math is not very complicated. The more you learn it, the more computer will reveal its secret. So that's it from this video, guys. I hope you liked this one, and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forget not to subscribe to our channel. If you have any doubt related to any of the topic, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in the description box. Also check description box for the link to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.